Hello friends, in the last class we have dealt about Ohm's law, the properties of Ohm's law, validity and the failure of Ohm's law, and tried to give you all sort of things. Today we are supposed to extend Ohm's law in a way current density, in a way of current density. Now, what do you understand by the word current density? First question is this. Now, if I be the current flowing through a cross-sectional area A, then the current density J in that conductor is given by J is equal to I by A. Unit wise, unit is ampere per meter square, that is ampere per meter square. One more thing I would like to tell you, that current is a scalar quantity but current density is a vector quantity. You should write current is a scalar quantity while current density is a vector quantity. That should be kept in mind. Now, let us take the localized picture. What we do? Can I rub this? कोई दिक्कत? Fine. Let us take the localized picture in a way. Let us consider a conductor of area A, cross-sectional area A, and current flowing through it is I. Okay. Let J be the current density. So we can write the current flowing through the conductor I is equal to J into dA. That is I is equal to J into A. First. Now, what is I? I is equal to V by R from Ohm's law. V E into L by R. L is the length of the conductor. You can take. R is the resistance of the conductor. So, we can write EL upon rho L by A
Is it? Rho is the resistivity of the conductor. Rho is the resistivity of the conductor. So we can write I is equal to EA by rho. बेटा इसको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. It is V by R. V होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ. EL by R. R is rho L by A. तो LL कट जाने के बाद EL EA by rho. EA by rho. EA by rho. Now, equating 1 and 2 we have and 2 we have J A is equal to E A by rho, that is J is equal to sigma E. Sigma is 1 by rho, called the conductivity of the conductor. So this is the most important formula, and this is also called Ohm's law. One thing keep in mind. J is equal to sigma E. Any problem? Fine. Questions are very frequent on this formula, and it is very, very applicable everywhere. Now, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सब कुछ आपको नोट करते जाना है. ध्यान रहे इस चीज का. कॉपी में सबको नोट करते जाइए आप. ओके, फाइन. Let us now discuss about the motion of electrons in any conductor. How do electrons move? How do electrons travel in a confined cross-section of a conductor? So, when the electrons are moving in a conductor without any electric field or without any external applied potential difference, they move in a very random manner. I mean to say, they move arbitrarily in any direction, like a gas particle. That's why electron in a conductor is called electron gas. That should be kept in mind. Because the movement of electron is not fixed, and it can move in any way, in any direction. And since large number of electrons are there, they all are moving in different directions. So net motion or net flow of electron in the conductor is zero. That's why we consider that no current is flowing in a conductor when net external potential difference is not applied. इसको समझने में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए. मेरा कहना यह है कि कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं. मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी है. टेम्परेचर के कारण उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है, और उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए वो आर्बिट्ररी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. अगर वो किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो जीरो हो जाता है. सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. सारे इलेक्ट्रॉन यदि एक साथ मूव करेंगे तो किसी एक एरिया को क्रॉस करने के लिए नेट इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो क्रॉस करेगा दैट इज जीरो. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब तक हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर में नहीं लगाएंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा. बिकॉज द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो. इसका मतलब यह नहीं होता
कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, ध्यान रहे इस बात का। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट आर्बिट्रली इन एनी डायरेक्शन। अगर वो एनी डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वन डायरेक्शन इज 0। ये बातें अगर ठीक समझ में आती है तो हमारा काम हो गया। फाइन, लेट अस सपोज consider an electron in a conductor. Initially, when no potential difference is applied, the electron move arbitrarily in any direction. Due to the gain in the kinetic energy due to temperature. That's why electron in a conductor ductor is called electron gas. Because the movement is restricted and arbitrary. Movement is restricted due to the confinement of the conductor and it is arbitrary. It can move in any direction. That should be case. Therefore, can I proceed? No. The movement of the electron in any conductor is restricted and arbitrary. That's a big improvement. The two words are very important: restricted and arbitrary. Fine. Now, in any conductor, there is not one electron, a number of electrons are there. So when they all move together, कोलिजन मत टेक प्लेस। ये वही बात है, आप भीड़ में अगर बाइक लेके चलते हैं तो आप कितना तेज चल पाएंगे? आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इससे जा रहे हैं, इधर मुड़ रहे, इधर मुड़ रहे, इधर मुड़ रहे, इधर मुड़ रहे, अपने आप को रास्ता निकाल के उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर एंड दे यूज्ड टू कोलाइड frequently. They used to collide frequently. One more thing I would like to decide here is relaxation time.
understand the word. It is the time in average time interval between two successive collision. It is denoted by tau. Average time interval between two successive collision is called relaxation time. That has to be taken care of. Now, let us apply the potential difference in a conductor. Suppose this is a conductor and we are applying a potential difference V across it. So what will happen? The electrons here will move along this direction and it will experience a force due to the electric field applied here. So what we see, net force applied on the electron, on one electron basically, is minus E into E. Right? So acceleration of the electron A is equal to F by M, so minus E by M. The velocity of the electron after time t is V is equal to V naught plus A into t. That is V is equal to V naught minus E by M. ME basically mass of electron we are considering. Let us take the average part. If we average it, E by ME, time average. So, we have come to know and we have already discussed that the average initial velocity is 0. That we have discussed already. So, we can write the VD is equal to minus EE by ME into tau. Tau is the average time to which it is moving from one place to another place. This is called the relaxation time between two successive collisions that we have seen. We did this. Now we have again I is equal to MEAVD. कोई दिक्कत? हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. Just put the value. So I equal to MEA VD is minus EE by M into tau. Okay, so we can write N E square E tau by M into A. I by A is N E square E tau by M. यहां तक कोई दिक्कत? और I by A को हम लोग क्या लिखेंगे? J is equal to N E square E tau by M. कोई दिक्कत? J क्या होता है? J is equal to sigma I. हम लोग अभी प्रूफ किए हैं. अभी प्रूफ किए. तो we can write sigma E is equal to N E square E tau by M. M means it is the mass of electron. Always keep in mind. I can put it here E. So
we can write directly, this EE will go off. Sigma is equal to N E squared tau by M. Sigma is conductivity of the conductor. Sigma is equal to 1 by rho. Rho is the resistivity of the conductor. What is rho? Resistivity of the conductor. So what we can write? Rho equal to Me upon N E square tau. Me upon N E square tau. Two things we are required to understand here. जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, माइंड द थिंग, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है और वैसे वैसे हमारा टाउ डिक्रीज होता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, मतलब रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है. बात समझ में अगर नहीं आ रही तो आप ये समझो, as temperature increases, the kinetic energy or V, kinetic energy simple, increases, means relaxation time tau decreases. This goes on, resistivity of the conductor increases. So you can see, with the increase of temperature, resistivity is increasing. With the increase of temperature, resistivity is increasing. That is well known to us. We have already discussed that. And we will find how it depends on temperature. We have the different formats and coefficient of resistance, coefficient of temperature, we will find in a different way. That should be kept in mind. You can verify this. Means, when the resistivity is increasing, means conductivity is decreasing. Conductivity is decreasing. So you can see, with the increase of temperature, conductivity is decreasing. With the increase of temperature, conductivity is decreasing. कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो. Now, so we can summarize the thing. These sort of expressions are very important from the numerical point of view. Keep in mind, जितने भी आपके इंटरेस्ट लेवल के बुक्स हैं, इससे बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स उसमें दिए हुए हैं. 3, 4, 5 फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है. अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेते हो तो आपका काम हो गया. इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना. चलिए, लेट अस समराइज. पहला, V इक्वल टू IR. दूसरा, R इक्वल टू रो L बाई A. रो इज द रेजिस्टिविटी, दैट इज वेल नोन, कोई दिक्कत नहीं है. तीसरा, रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा. चौथा, I इज इक्वल टू NEAVD. VD is the drift velocity. This is drift velocity. N is current electron density. N is electron density. वो हम लोग किए हुए हैं, उसमें दिक्कत नहीं होगी आपको. नो. पांचवा, J is equal to sigma I. कोई दिक्कत. छठा,
रो m upon n e square tau. Tau is the relaxation time, हम लोग कर चुके हैं. सातवां, sigma is equal to 1 by rho, that is sigma is equal to n e square tau by m. यहां तक आपको देखना है. तीसरी बात, आठवां, J is equal to I by A, ये देखना है आपको. ओके, यहां तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है. In the next class, we will be dealing with temperature coefficient of resistance. इसको पूरा ध्यान से देखिएगा. और बच्चों ये जो है, ये आपके +2 पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है. इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा. इसका थ्योरी इंपॉर्टेंट है +2 पॉइंट ऑफ व्यू से. और न्यूमेरिकल्स आर फ्रीक्वेंट. आई एम यूजिंग द वर्ड फ्रीक्वेंट इन द इंट्रेंसिकल. आराम से नोट कीजिए, दिमाग में सेटल करने का कोशिश कीजिए किसी भी तरीका से. कंफ्यूजन खुल के मैं बोलता हूं, यहां और यहां होता है. रो और सिग्मा में ये होता है. आप जब भी देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है. ये बात जानते हैं. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है, मैंने दिखाया भी यहां पर अभी, कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, जल्दी जल्दी टकराने लगता है. जब जल्दी जल्दी टकराएगा तो टाइम कम हो जाएगा. जब जैसे टाइम कम होगा, रेजिस्टिविटी आपका बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. इसीलिए मैंने कहा कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है कंडक्टर का विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डीलिंग with the temperature coefficient of resistance. That is also very, very important. Thank you very much.